Hello everyone, welcome to another case study. And dear students, this time I'm taking a case study for class 11th grade students. And this case study is from Unit-7, and that is resource mobilization. And the title of today's case study is Interesting Realization. And believe me on this, that once you will take up this case study with me, you are going to understand the complete concept of resources and its mobilization. So let's start today's case study. Unit 7, resource mobilization. And the title of the case study is Interesting Realization. So let's start with the first point. It's a small case study, but it is very useful and very helpful in order to understand the basic concept of resources and their mobilization. So, the first point, Rahul Sharma, the founder of a five-star hotel, an engineer from Banaras Hindu University, has come a long way. तो जो ये पूरा केस स्टडी है, it revolves around the person whose name is Rahul Sharma, और ये एक फाउंडर हैं फाइव स्टार होटल के, जिन्होंने बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है जो बनारस के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां से इंजीनियरिंग करी थी और आज ये बहुत आगे आ गए. सेकेंड पॉइंट, hailing from a family which has three generations of businessmen, Rahul had to virtually start from scratch to struggle way up in his life. तो इनकी जो फैमिली थी, इनके फादर, उनके फादर के फादर, ये मीन्स राहुल के दादा, और उनके दादा के फादर, ये तीनों बिजनेस में थे. बट समवेयर द बिजनेस वाज नॉट फ्लरिशिंग. सो व्हाट राहुल डिड, राहुल analyzed the situation, understood the root cause of less earning, and then he changed everything. And what he changed is a part of the case study. So hailing from a family which had three generations of businessmen, Rahul had to virtually start from scratch to struggle his way up in his life. तो उन्हें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा और ऊपर बढ़ने के लिए. It was not that easy a journey for him. Third point, his forefathers are well settled at Batala in Punjab. एक जगह है पंजाब में जहां पर इनके forefathers settled थे. Where they had foundries, फाउंड्रीज बच्चों फैक्ट्री होती है जहां पर मेटल को मेल्ट करके छोटे छोटे कंटेनर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. A factory where metal is melted and poured into specially shaped containers to produce objects. So objects बनाए जाते हैं. ये वो फाउंड्रीज है. यहाँ पर मेटल को पिघलाकर उनको रीशेप किया जाता है. Of non-ferrous rolling mills and machine tools units. So इनकी जो फोर फादर्स थे, उनकी फाउंड्रीज थी और वो वेल सेटल्ड थे बटाला के अंदर इन पंजाब. इन 1957 जो राहुल के फादर थे, राहुल्स फादर decided to separate from his family and shift to Bhandara. Bhandara is a place near Nagpur to start a metal unit. उन्होंने कहा हम अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं. एंड दिस टाइम इट इज नॉट गोइंग टू बी इन पंजाब, इट इज गोइंग टू बी इन भंडारा इन नागपुर. और उन्होंने पार्टनरशिप की, इन पार्टनरशिप विद अ लोकल बिजनेसमैन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन फेरस यूटेंसिल्स. और इस बार भी उन्होंने नॉन फेरस यूटेंसिल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक लोकल बिजनेसमैन से हाथ मिलाया एंड ही वांटेड टू स्टार्ट इट्स मैन्युफैक्चरिंग. और बच्चों नॉन फेरस मटेरियल क्या है? मेटल अदर देन आयरन और स्टील. इट कैन बी जिंक, इट कैन बी कॉपर, इट कैन बी ब्रॉन्ज. तो इनके यूटेंसिल्स बनाने का उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया अलॉन्ग विद द लोकल बिजनेसमैन फ्रॉम नागपुर. नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट. In 1968, nearly after 9 years of his father starting the business, in 1968, Rahul took over his father's business only to find out that the income from the business was barely enough to sustain his large family of 4 brothers and 2 sisters. तो उन्होंने 9 साल के बाद एनालिसिस किया कि भाई हम इतना बिजनेस कर तो रहे हैं, पर जो हमारी बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, अर्निंग कम है, और हम 6 लोगों की फैमिली जिसमें इनफैक्ट पेरेंट्स एज वेल, 8 लोगों की फैमिली जिसमें पेरेंट्स भी हैं, 4 ब्रदर्स भी हैं और सिस्टर्स भी हैं, इसको हम सस्टेन नहीं कर पा.
तो बच्चों हमें वैसा बिजनेस नहीं करना है कि बिजनेस में वी आर इन्वेस्टिंग अ टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज, और उसके बावजूद भी हमको रिटर्न्स नहीं आ रहे. वी डू नॉट हैव टू डू दैट सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस. Rahul critically reviewed the whole business situation, the company structure, overheads, raw material suppliers, etc., to evaluate where the things were going wrong. अब राहुल ने कहा कि हमें ना स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेयर द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इज. मेहनत तो हम सब कर रहे हैं, मेरे फादर भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, पर पैसा क्यों नहीं बन रहा, बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनी का स्ट्रक्चर चेक किया, हु इज वेयर, हु इज वर्किंग ऑन विच पोजीशन, क्या क्या काम हो रहे हैं और क्या क्या काम गलत और सही हो रहे हैं. उसके बाद ओवरहेड्स, खर्चे क्या क्या है, कितना खर्चा है, कितनी अर्निंग है, रेशो क्या है, हाउ मच वी आर अर्निंग एंड हाउ मच वी आर स्पेंडिंग. रॉ मटेरियल सप्लायर्स, कहां से माल ला रहे हैं, कितने का ला रहे हैं, हैड वी मेड एनी कंपैरिजन, क्या हमने कंपैरिजन चार्ट बनाया है, क्या हमने चेक किया है कि माल और जगह से हमें सस्ता मिल सकता है. तो हैड दे डन ऑल दोस थिंग्स, प्रॉब्लम्स नहीं आती. तो उन्होंने कहा स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि हम रूट कॉज तक पहुंच सके. एंड ही डिड दैट आफ्टर 9 years ऑफ his father establishing that business. Seventh point, it was here he realized that on one hand, their basic raw material like brass, scrap, copper, and zinc was not only costly, but the transportation cost heavily affected their working capital. As this all came from western region of Maharashtra, mainly from Mumbai and Pune. तो उन्हें लगा जो हमारा रॉ मटेरियल है, विच इज जिंक, ब्रास एंड कॉपर, ना ही ये कॉस्टली है, पर ये आता भी बहुत दूर से, वेस्टर्न रीजन से आता है, महाराष्ट्र से आता है, तो टू एंड फ्रो ही बहुत महंगा पड़ जाता है, इसको लाने ले जाने का खर्चा ही बहुत पड़ जाता है. ऑन द अदर हैंड द मेजर चंक ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, और इसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट वो इस रॉ मटेरियल के बेस पर बनाते हैं, ब्रास यूटेंसिल्स वर सोल्ड इन दीज रीजन्स ओनली. तो वेस्टर्न रीजन से कच्चा माल आता है, और फिर नागपुर से वेस्टर्न रीजन में जाके ही फिनिश प्रोडक्ट बिकता है. तो दैट वाज द रियल कॉस्ट. दिस फैक्ट केम एज अ टर्निंग पॉइंट. तो ये फैक्ट बच्चों एज अ टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में आया, उनके बिजनेस में भी आया. This came as a turning point in his business. I just mark. Ninth point, easy availability of raw material and closeness to the market acted as the key agents to make him shift to Pune. उन्होंने अब डिसाइड किया कि हम नागपुर में बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते, अब हमें शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम नागपुर टू पुणे, ताकि हमारे को कच्चा माल भी आसानी से मिल सके, और जब इसको हम फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दें, वो इजिली लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से वहां तक पहुंच भी सके और बिक भी सके. तो नाइन्थ पॉइंट इज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स, easy availability of the raw materials because it is near to Pune. Now they have shifted to Pune, and closeness to the market acted as the key agents टू मेक हिम शिफ्ट टू पुणे. और उसके बाद उन्होंने देखा कि पुणे में शिफ्ट करना हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल, ज्यादा प्रेफरेबल है. देन दे शिफ्टेड टू पुणे. सिंस देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. This not only resulted in saving the transportation cost, very very important, and this is what the way entrepreneurs they work, but brought down significantly their overall cost of production as well. और उसके बाद उनकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नीचे आ गई, बिकॉज जो ओवरहेड से वो कम. बट जब भी हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन में हम हमेशा बात करेंगे ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द एक्टिविटीज टेकन बाय एन organization in relation to
to financial, human, and material resources in order to advance their mission. So, बच्चों, all the activities taken by an organization in relation to financial, human and material resources, मतलब जब एक ऑर्गेनाइजेशन है हर इस चीज पर एक्सेस कर लेती है, वेदर इट इज फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, और इस पर कंट्रोल कर लेती है इन ऑर्डर टू एडवांस देयर मिशन, तब एक्चुअल में रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है, क्या वो करती है. So, बच्चों, with these 10 points, we have come to the end of today's session. और आज का सेशन था, छोटा सेशन है बट बहुत इंटरेस्टिंग है. हमने राहुल का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, कैसे आज वो एक 5 स्टार होटल स्टार्ट कर चुके हैं, बट इस जर्नी वाज नॉट दैट सिंपल. उनके फोर फादर्स बिजनेस तो कर रहे थे, बट बिजनेस वाज रनिंग इनटू लॉस. और जब उन्होंने स्क्रूटनाइज किया और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर काम किया, ओवरहेड्स पर काम किया, द बिजनेस स्टार्टेड रनिंग इनटू प्रॉफिट्स. सो बच्चों, इस केस स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं विच आई बिलीव यू शुड नो इन ऑर्डर टू आंसर देम प्रॉपर्ली इन द एग्जामिनेशन. पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस स्टडी, इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन. क्या आपको समझ में आया इस केस स्टडी से? You have to write down a short note of 200 words. Second question, why arranging and procuring proper resources is a very important function of an entrepreneur. बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट है, जब आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन मेरे साथ करेंगे आप समझेंगे कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज, मटेरियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इनको मैनेज करना इज सो टफ. मिसमैनेज करना इज वेरी इजी. जब आप बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इन चीजों को मिसमैनेज करते हैं, इट रिजल्ट्स इनटू लॉसेस. और इसी को कहते हैं प्लानिंग, इसी को कहते हैं स्ट्रैटेजीज. तो why arranging and procuring proper resources is a very important function of an entrepreneur, explain. And third question, can this be possibility that a person is doing the business from ages and still he is doing it wrong? क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई व्यक्ति कई सालों से, डिकेड से बिजनेस कर रहा हो और उसे गलत कर रहा हो? तो आपको वेयर इन द केस स्टडी यू रियलाइज द सेम, कहां आपको केस स्टडी में रियलाइजेशन आई कि ऐसा हो रहा? प्लीज आंसर दीज क्वेश्चंस. यू कैन send me these questions on my email id which I mentioned in the beginning. आप स्टार्टिंग में अगर चेक करेंगे तो मेरा ईमेल आईडी है यहाँ पे, आप pushratlucky@yahoo.com पर भेज सकते हैं. I'll check it and I'll revert it back to you. अब बच्चों, जो हमारा मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन का यूएसपी है, क्वेश्चन विद हिंट्स. अब मैं आपसे, क्योंकि छोटा केस स्टडी था, 7 क्वेश्चंस पूछूंगा और उनके हिंट्स में आपको साथ साथ, और ये आपको एज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. पहला क्वेश्चन, राहुल्स फोर फादर्स वर वेल सेटल्ड एट डैश इन पंजाब, वेयर दे हैड फाउंड्रीज, नॉन फेरस रोलिंग मिल्स एंड मशीन टूल्स यूनिट्स. तो कहां पे सेटल्ड? दे वर सेटल्ड इन बटाला. सेकंड क्वेश्चन, in dash, Rahul's father decided to separate from his family and shift to Bhandara near Nagpur to start a metal unit in partnership with a local businessman for manufacturing of non-ferrous utensils. तो कब किया था? In 1957, आजादी के सिर्फ 10 साल बाद. In 1968, the third question, Rahul took over his father's business only to find that the income from business was too much to sustain his large family of 4 brothers and 2 sisters. Pay attention to this. ऐसे questions आपसे पूछे जा सकते हैं in the form of true and false. So in 1968, Rahul took over his father's business only to find that the income from his business was too much.
बहुत ज्यादा थी to sustain his large family of 4 brothers and sisters. No, it was too meager, too low, and that's why, he scrutinized it. So the right answer is false. Next question. Fourth one. It was here he realized that on one hand, the basic raw material like brass, scrap, copper, and zinc was not only costly, but the transportation cost heavily affected their working capital. Whether this statement is true or false, अगर आपने केस स्टडी ध्यान से समझी है, मेरे साथ आप रहे हैं थ्रू आउट द केस स्टडी, you can easily answer this question. The right answer is this was the real problem. This was the real problem. Fifth point or fifth question. Rahul critically reviewed the whole business situation, the company structure, overheads, raw material suppliers, etc., to evaluate where the things were going dash. Dash means यहाँ पर क्या चीज थी जो you can add on to dash, that is wrong. क्या चीज गलत हो रही थी, तो scrutiny करना was very important on the part of Rahul, being the owner of the business. Sixth question. Rahul Sharma, founder owner of a 5-star hotel and dash from Banaras Hindu University, has come a long way. अगर आपको एक basic question ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पूछ लिया गया तो आपको पता होना चाहिए he was an engineer. He was an engineer from Banaras University, though he was very studious, he was very educated, but अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसकी स्क्रूटनाइज इन डेप्थ स्टडी करना बहुत जरूरी है. और ये मानना कि यू कैन ऑल्सो बी रॉन्ग समवेयर ऑलवेज प्रोवाइड्स यू द राइट डायरेक्शन टू. मैं दोबारा बता रहा हूं, ये मान लेना अपने बिजनेस में कि आप भी कहीं गलत हो सकते, provides you the right direction to improve and grow. Last question. Hailing from a family which had 3 generations of businessmen, Rahul had to virtually start from scratch to struggle his way up in life. करना पड़ा, क्योंकि जरूरी नहीं है बच्चों की पिछले कोई 10, 15, 20 साल से बिजनेस कर रहा हो और वो सही कर रहा हो. It is very important that you should know where you are going wrong and why you are going wrong. तो उनके लिए एक नए बिजनेस की तरह. Yes, it's a true answer. Hailing from a family where 3 generations of businessmen were there, Rahul had to virtually start from to struggle way up, in life. So, with this, we have come to the end of this case study. And soon, I've told you in the last session as well, soon I'm going to start with the units of class 11th and 12th. So the wait is going to get over soon. And thank you very much for your responses that you are giving regularly. I'm observing that students are watching. We need more subscribers so that you can share these videos to the students, those who are in need of, learning related to entrepreneurship of class 11th and. So I think this case study is going to help you a lot in order to initiate the learning of the concept of resource mobilization. Thank you very much. Till we meet in the next class. Bye-bye for now. God bless you all. And don't forget it, this is a presentation by Team Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always give. Thank you very much.